વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થઈ ચૂક્યું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર સત્યેન્દ્ર પટેલ 30,500 કરતાં વધુ મતોથી તેમણે કોંગ્રેસના ભીખાભાઈ રબારીને પરાજિત કર્યા છે। ખાસ કરીને માંજલપુર વિધાનસભાની જ્યારે પણ વાત થાય ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આ બેઠક ગઢ માનવામાં આવતી હતી અને એકવાર ફરી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જીત હાંસલ કરીને પોતાનો ગઢ બરકરાર રાખ્યો છે। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું અતુલ તિવારી અને આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક। અમારી વિશેષ રજૂઆત આજની વાતમાં આજે વાત કરવી છે વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા સીટની, કારણ કે વર્ષ 2022માં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં યોગેશ પટેલનો માંજલપુર વિધાનસભા સીટથી વિજય થયો, પરંતુ તેમના નિધન બાદ આ સીટ એકવાર ફરી ખાલી થઈ। આ સીટ ઉપર પેટા ચૂંટણીનું આયોજન થયું। 30 જુલાઈના રોજ મતદાન થયું અને મતદાનના અંતે જ્યારે આજે કાઉન્ટિંગ થયું ત્યારે 19 રાઉન્ડના કાઉન્ટિંગ બાદ 30,500 કરતાં વધુ મતોના માર્જિનથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર સત્યેન્દ્ર પટેલે કોંગ્રેસના ભીખાભાઈ રબારીને પરાજિત કર્યા। ખાસ કરીને જો માંજલપુર વિધાનસભા સીટની વાત કરવામાં આવે તો વર્ષ 2012, 2017 અને 2022માં ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી યોગેશ પટેલનો આ સીટથી વિજય થતો રહ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે માંજલપુર વિધાનસભાની સીટ ગઢ રહી છે, પરંતુ વર્ષ 2022માં જ્યારે યોગેશ પટેલે આ સીટથી જીત હાંસલ કરી હતી ત્યારે જીતનું માર્જિન 1 લાખ કરતાં વધુ મતોનું હતું, પરંતુ જ્યારે પેટા ચૂંટણીનું આયોજન થયું ત્યારે માત્ર 82,000 જેટલા વોટ પડ્યા, જેના કારણે કોંગ્રેસ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની વચ્ચે કાંટાની ટક્કર હોવાની વાતો સામે આવી। અને આજે સવારે જ્યારે કાઉન્ટિંગ શરૂ થયું ત્યારે કોંગ્રેસને પણ એક ચમત્કારની આશા હતી, પરંતુ ગુજરાતમાં ફરી એકવાર એ ચમત્કાર કોંગ્રેસ સામે ન જોઈ શક્યું અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર સત્યેન્દ્ર પટેલે કોંગ્રેસના ભીખાભાઈ રબારીને 30,500 કરતાં વધુ મતોથી પરાજિત કર્યો। આ અંગે અમે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમની સાથે વાત તો ન થઈ શકી। પરંતુ વડોદરા શહેર કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ ઋત્વિજ જોશી સાથે અમારી વાત થઈ। તેઓએ શું આરોપ, શું આક્ષેપ અને પોતાની હારના જે કારણો છે, ખાસ કરીને કોંગ્રેસની હારના જે કારણો છે, તેના વિશે શું કહ્યું, आओ सांभळिए તેમના વાત। कोई बीजेपी की लहर नहीं है, ये बीजेपी की नाकामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से कम वोटिंग हुआ है वो कहीं ना कहीं मांजलपुर के जो मतदाता है उनका रोष भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, हम सबके सब हमारे सामने थे, हमारे खिलाफ थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायोलेशन हुआ, आदर्श आचार संहिता का भंग हुआ, उसकी इतनी कंप्लेंट रिटर्न में मैं एज अ प्रेसिडेंट नहीं, लेकिन मैं हमारे कैंडिडेट भीखाभाई रबारी का चुनाव एजेंट भी मैं हूँ, रिटर्न में लिख के दिया है जिला कलेक्टर को, आरओ को, ऑब्जर्वर को, पुलिस प्रशासन को। एक पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है चालू चुनाव में। आप बताइए कि चुनाव आयोग ने जो सालों से नियम बनाए हैं कि 48 आवर्स के पहले यानी 48 घंटे पहले प्रचार बंद करना है, 29 तारीख को 6 बजे प्रचार बंद हो गया। फिर कैसे 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, बड़े बड़े नेता, उनके पार्टी का चिन्ह खेस पहन के ढोल नगारा लेके प्रचार कर रहे। हम रिटर्न में कंप्लेंट दे रहे, हमारे एक वार्ड अध्यक्ष ने पुलिस बुलाई तो पुलिस हमारे वार्ड अध्यक्ष को पकड़ के ले गई। तो जब पूरा प्रशासन सामने है, सरकारी मशीनरी का मिसयूज हो रहा है, एक डर का माहौल बनाया, एक भय का माहौल जनता के बीच में, जो कांग्रेस कार्यकर्ता को मारा गया वहां पे एक भय का माहौल बनाया, लोग वोट करने नहीं निकले। इतने कम वोट में मैं नहीं मान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता है, ये उनकी विफलता है। और कांग्रेस पार्टी, देखिए हमारा तो क्या है, हमारा उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं है। चुनाव के परिणाम जो भी आए, जो भी जनता ने हम पे विश्वास किया है, भरोसा किया है, हम उनका आभार मानते हैं। लेकिन ये जो पूरा चुनाव है ये साम दाम दंड भेद और षड्यंत्र की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि ना उनका कैंडिडेट लोकल था, हमारा कैंडिडेट भीखाभाई रबारी मांजलपुर का स्थानिक था, जो मांजलपुर की जनता की डिमांड थी। कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर भी डिमांड यही थी। तो हमारा कैंडिडेट स्थानिक था, एजुकेटेड, बी मैकेनिकल, वो यहाँ से एमएस यूनिवर्सिटी में सैंड मेंबर रहे, कॉर्पोरेटर रहे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, और जब मंत्री थे तब उन्होंने जो काम किए उसका लाभ आज भी जनता को मिल रहा है। तो अनुभवी कैंडिडेट थे, पढ़े लिखे थे, स्थानिक थे। कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का जो मिसयूज हो रहा है उसकी वजह से ही कांग्रेस चुनाव आ रही है। अच्छा, गुजरात के मांजलपुर इस सीट के अलावा मध्य प्रदेश और बिहार में भी
एक एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पे बीजेपी पिछड़ती दिखाई पड़ रही है। कई सारे मुद्दे हैं, लोग कहते थे कि युवाओं के मुद्दे हैं, पेपर लीक का मुद्दा था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, जंतर मंतर पे हमने आंदोलन देखा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन गुजरात में जिस प्रकार से इस सीट का परिणाम आया, आप शायद आप कंप्लेन जरूर से कर सकते हैं, आप आरोप जरूर से लगा सकते हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास उस स्तर पर कांग्रेस हासिल नहीं कर पा रही। देखिए, पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में जो रेगुलर विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, वो चुनाव के नतीजे और ये नतीजे आप देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, लोगों ने जनता ने हम पर भरोसा किया है, तो हमारी वोटिंग तो बढ़ी है। बात ये कर रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट कांग्रेस के सामने बीजेपी खुद चुनाव लड़े, न कि सरकारी मशीनरी, निष्पक्ष चुनाव हो, तो कांग्रेस 100% जीतेगी। और जनता ने हम पे भरोसा व्यक्त किया। पूरे देश में जो माहौल है वही गुजरात में, वडोदरा में, यहाँ पे भी नाराजगी है। यहाँ पे भी ये मांझापुर एरिया में यहाँ पे पूरे 2 साल पहले बाढ़ आई, पूरा मांझापुर पानी में था और वो आज भी लोगों को याद है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो कि जो बीजेपी की हार्डकोर वोट बैंक है, वो लोग वोटिंग करने क्यों नहीं निकले, क्यों मतदान कम हुआ। एमएलए, बड़े बड़े नेता ढोल नगारा लेके निकले, फिर भी लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। मैं ये कांग्रेस की हार नहीं मानता हूँ। કોંગ્રેસ તરફથી આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે આ ચૂંટણી તેઓ માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે નહોતા લડ્યા, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારી મશીનરીઝની સામે લડ્યા, પરંતુ જે પ્રકારે મતદાન ઓછું થયું તે જોતા કોંગ્રેસ તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે પ્રજામાં આક્રોશ હતો, તેના કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મતદાતાઓ પણ બહાર ન નિકળ્યા અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત નથી, પરંતુ એક પ્રકારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પરાજય છે। સાથે જ કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો કે ચૂંટણીના દિવસે પણ ઢોલ નગારા સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રચાર કર્યો હતો। આ સમગ્ર મામલે અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે વિજેતા કેન્ડિડેટ છે સત્યેન્દ્ર પટેલ, તેમની સાથે પણ વાત કરી। જીત બાદ તેઓ વિજય સરઘસ લઈને જ્યારે નીકળ્યા ત્યારે તેમની સાથે થયેલી વાતચીત અને આ જીતનો શ્રેય તેઓ કોને આપી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ તેમની સાથેની મારી વાતચીત। जनता का प्यार हर हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे माजलपुर विधानसभा का ये गढ़ है, रहा है और रहेगा। आज साबित करके दिया है जनता ने कि वोट कम हुआ है लेकिन हमारा मार्जिन कम नहीं हुआ है। मैं सभी मतदार भाइयों बहनों का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे पार्टी के अध्यक्ष दंडक बालू भाई, सभी भारतीय जनता पार्टी के चुनायले पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी और हमारे कार्यकर भाइयों का बहुत 15 दिन मेहनत की है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रजाजनों का भी खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। खास करके गुजरात के इस मांजलपुर बैठक पर उपचुनाव हुआ, साथ ही में मध्य प्रदेश और बिहार में भी उपचुनाव एक एक सीट पर हुए, लेकिन वहां पे बीजेपी पिछड़ती दिखाई पड़ी है। ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिसको लेकर गुजरात में आज भी मांजलपुर सीट पे जब उपचुनाव हुए हैं तो जनता का प्यार बीजेपी को मिल रहा है? वैसे ये गुजरात के 2 महानुभाव आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब और अमित भाई शाह साहब का ये गढ़ है। लोकसभा की सीट पहले आदरणीय मोदी साहब यहाँ से लड़े थे और बहुत जंगी मार्जिन से जीते थे। गुजरात वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इधर कांग्रेस का नामो निशान नहीं है और कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। इधर सालों तक 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रजाजनों ने शासन दिया है। तो मित्रों, આજના દિવસની જો વાત કરીએ તો મધ્યપ્રદેશની સાથે બિહાર અને ગુજરાતની માંજલપુર, આ 3 સીટ ઉપર પેટા ચૂંટણી થઈ હતી, પરંતુ ગુજરાતની માંજલપુર સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય એકવાર ફરી થયો છે। પોતાનો ગઢ બચાવવામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સફળ રહી છે। ત્યારે આ જ પ્રકારના અન્ય અને વધુ સમાચાર જાણવા જોતા રહો ગુજરાત તક।